And which is why I think a lot of people are hoping that this time the results are going to be different. But before this interview, I was talking to a lot of people and I said, if you were to talk to Bill Gates about polio, what would you ask? I wanted to get a feel. And almost everybody I talked to said, well, this is wonderful, his foundation is giving so much money, this is great, but, there's always a but. How do we know that money will actually translate into the kind of action that Bill Gates really wants? Herein lies the problem. You mentioned the big challenge. It's a sum total of a lot of small little challenges. And everybody in Pakistan wants to know, how will you ensure that money actually goes through the system, gets to the people who really need it? Well, many types of aid are hard to track, but vaccination in general and polio in particular is pretty straightforward, because you look at how much you're going to spend on the vaccine, 13 cents a dose. You look at how much you're going to pay the vaccinators to go and do their job. You look at the management, the surveillance, the promotion, and you can come up with that budget. And so you fund it at that budget level, and then you see, do people do what they say they're going to do? And we have lots of ways of doing surveillance to check are kids covered. In the long run, you just look at where the disease goes away. So of all the programs, this one has a very clear ability to follow the money and to make sure you're getting the value for that money. Now, some vaccinators can say they went and saw kids who didn't, but you'll see that they're not marked that way, and you'll see the disease. Getting higher level people, the DCOs, the higher level administrators involved, is part of why this plan, I think, has more accountability than some of the plans in the past. Which I suppose is the key thing, because one of the reasons why earlier plans didn't work was because of a lack of accountability. At the lower level, there were problems, and I'm sure that you know that very well. You've been meeting with senior Pakistani officials, also mid-level Pakistani officials, and you must be getting a feel of the challenges. I mean, it's easy for the president to say that, yes, I'm fully committed, and he is. But that's not enough. Commitment is not enough. There has to be much more. This time around, I think everybody is expecting that with yourself and your foundation coming in, there's going to be more transparency. But they're not sure whether Bill Gates Foundation is in the job of actually going down and looking at the transparency at the lower level. Is that true? We are not directly doing that. We work with partners. The World Health Organization, WHO, does some independent surveillance. UNICEF does that. And the government plan has a lot of good reviews built into it. The Ministry of Health has some very good experts. The quality of the plan is quite good. We've got to make sure there's no disruption at the ministry in terms of the work they do. And as you say, that each individual vaccinator actually gets out there and finds the kids. पाकिस्तान में जो पोलियो के खिलाफ जंग हो रही है, उसमें 3 मेन प्लेयर्स हैं. नंबर 1 हुकूमत पाकिस्तान, नंबर 2 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और नंबर 3 यूनिसेफ. इन तीनों में सबसे जो मेजर प्लेयर है वो हुकूमत पाकिस्तान, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी वजारत सेहत जो है उसका मरकजी किरदार है. लेकिन 18वीं तरमीम के पास होने के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो तो डिवॉल्व हो रही है, वो सूबों के पास चली जाएगी. 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जिन वजारतों को सूबाई हुकूमत के हवाले किया जा रहा है, उनमें वजारत सेहत भी शामिल है. माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि वफाकी वजारत सेहत की 4 हिस्सों में तकसीम से कई मसाइल पैदा हो सकते हैं. एक वजारत का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पोलियो समेत किसी भी बीमारी के खिलाफ बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों के लिए इस वजारत तक रसाई हासिल करना आसान होता है. सेहत की 4 वजारतें बनाने से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और दीगर आलमी तंजीमों के लिए सूबाई हुकूमतों से राब्तों का फुकदान पैदा हो सकता है. लेकिन हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ है कि वफाकी सतह पर वजारत खत्म होने के बावजूद किसी किस्म का खला पैदा होने नहीं दिया जाएगा. नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज करने हैं, तो ये तो नहीं हम कर सकते कि जी खैबर पख्तूनख्वा फरवरी में कर रहा है तो पंजाब मई में कर रहा है तो सिंध मार्च में कर रहा है तो कोई सूबा किसी महीने में कर रहा है. वो तो 3 दिन यकसां एक ही वक्त एक प्रोग्राम चलेगा, तो उसकी तो कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी. ये वैक्सीन पहुंचाने की, रिपोर्टिंग की कोऑर्डिनेशन करने की पड़ेगी, अदाद शुमार मंगाने की. पाकिस्तान में पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर अल्ताफ बोसन का कहना है कि वजारत सेहत की तकसीम से पोलियो के खिलाफ जंग मुतासिर नहीं होगी.
ہم تو صرف اور صرف آگے میں وہ کہوں گا کہ یہ ہم تو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں پروونسز کو کہ یہ ریسورسز اور اس کے علاوہ جو کائنڈ سپورٹ لا کے اور پروونسز کو دے رہے ہیں کہ اس کو یوٹیلائز کریں اور امپلیمنٹ کریں. ڈاکٹر الطاف بوسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیو کے خلاف ایمرجنسی پلان میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور جو کام وفاق کا ہے اسے جاری رکھا جائے گا. وزارت کی تقسیم کے حوالے سے ڈائریکٹر جنرل صحت اسد حفیظ کا کہنا ہے کہ ان کا اصل مقصد پولیو کے خلاف جنگ کو زیادہ مؤثر بنانا ہے، جس کے لیے صوبوں سے رابطے جاری ہیں. بڑی ریگولرلی پروونسز کے ساتھ اور ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں کہ کیسے اس ٹرانزیشن پیریڈ کو اس طرح سے بنایا جائے کہ پولیو اور باقی سروسز کی ڈلیوری میں کوئی فرق نہ آئے. وفاقی وزارت صحت کی تقسیم پر حکومتی نمائندے تو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، لیکن بل گیٹس کے تحفظات ابھی بھی برقرار ہیں. تو کیا اب 4 وزارتیں ہوں گی، 4 ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہوں گی؟ ایک بڑا مسئلہ ہے.